This conference will now be recorded. Right. So yesterday we done one Simulink model that was based on V is equals to IR, right? Where we also calculated the power and we used the normal block. This one was the constant block for the I and the constant block for R. Then we take a product block and connected the I and the R with this product block that we are multiplying I with R, that is equals to V, and in order to receive the power then we are further multiplying the V and I, that is the power. So if we run this simulation for either 1 second or 10 second or infinity period of time, we'll get the constant result because हमने जो parameters यहाँ पे लिए हैं for I and R, they both are the constant values, right? Now, I was telling you about the library browser yesterday कि अगर हम Simulink को open करते हैं then we got option of library browser also. I told you कि आप block को search भी कर सकते हैं simply double click करके if you have to pick any block like constant. So you can simply search to pick the constant like me. Otherwise, what is the second option which we may have? That is we can go to this library browser. Here we have, I already opened it because I told you yesterday it will take time to load, so I already opened it today. Now if we see, these are the toolboxes which we have in the Simulink library browser, and yesterday I was telling you about that we'll be using some of the toolbox for electric vehicles like Simscape and SimPower system. So Simscape is here, and in this Simscape we have to use the drive line for vehicles and the electric for the battery charging circuits and battery booster like DC power converter and power inverter circuits, right? Other than that, we also have some other toolbox for electric vehicles like Auto Start Block Set, that is also for the embedded electric embedded toolbox. And then if we talk about the core electronics toolbox, we have this DSP system, HDL support, embedded coder, fuzzy logic, HDL coder, HDL verifier, image acquisition. Then we have instrument control toolbox for instrumentation students. We have this control system toolbox for electrical student. We have computer vision communication tool, not communication, only computer vision, and then deep learning toolbox for computer science, and then this communication toolbox is for electronic student, right? So in this way, we have a lot of other toolboxes available here. We can simply see that we have all the toolboxes specified for the different branches. So yesterday also I told you that if we talk about this MATLAB, it's not only concerned to electronics or electrical. It is more concerned to all the branches of engineering, whether it is electronics or electrical or mechanical or civil or computer science or chemical or aerospace. And even if anyone is from any other branch, we can see that this is the main software where we can run the simulations, where we can calculate the mathematical expression and check the output. So let's leave these things because we have already discussed about it. If you remember, we used a constant block. So let's go to this commonly used block. Commonly used block we can find here in the Simulink. I told you that we have two methods. The first is basic mathematical graphical modeling, and second one is the core toolbox graphical modeling. So yesterday when we did V is equals to IR, that was basic mathematical graphical modeling, in which we have to use this Simulink only. So if we talk about this Simulink, we have different options here, like commonly used blocks, continuous, dashboard, discontinuities. So if you select them one by one, you can see all those blocks which we have used to create this V is equals to IR. The constant block is here. Then to find out the product block, we have more math operations. Here we can find add, subtract, multiply, gain, product, divide, square root, square, all those blocks, right? And if we go to the sinks, then we can find the display block, which we already saw yesterday. Scope block I didn't tell you yesterday because I told you कि आज हम एक कोई भी ग्राफ नहीं बना रहे, कल हम ग्राफ बना के देखेंगे. But today we are going to start with the electric vehicles. और electric vehicles के लिए हम जो अपना सबसे पहला मॉडल बनाएंगे, that is pulse generator. We will see कि हम कैसे pulse को generate कर सकते हैं first. But before that, first we need to understand why the pulse generator is important in case of this electric vehicle. You know, whenever we do the part of electric vehicle, it is important to manage the control signal. I even show you the block diagram yesterday. So the first component of electric vehicle was the control signal from the driver. So driver may give any signal to go forward, to go backward, to go fast, to go slow, to go constant, to take break. Any signal can be given by the driver.
and we have to work upon that signal, and to work upon that signal it is very important to generate the pulses, right? So like if you want to maximize the speed, whenever we talk about the pulse, it's 10, right? So let's say if I am generating one pulse in 10 seconds, right? So what I can do, if I want to maximize the speed, I can generate a pulse high for 9 seconds, and for that 1 second I can make it low. Total duration is 10 seconds, where I am generating only one pulse, and in that one pulse we have to give a signal of 1 as well as 0. Now I want to maximize the speed of my vehicle, so what I can do, I can give the width of the pulse to 90%. That means 90% of the time it will be high, and rest 10% it will be low. Now if I want to slow the speed, that time what we can do, we can give 90% to low and 10% to high, and if we have to take break, then we can apply the 99% or 100% to low, and then rest 1% or 0% to high. So this way we can generate the pulses using the pulse generator, and those pulses are actually given by the driver or the controller, so that we can control our electric vehicles, or so that we can control the motors connected through motor controller driver or the battery, right? So I told you, if it is completely your choice to pick the blocks for the Simulink library browser. I'll show you one block. Like if I have to pick this scope, I can simply drag and drop like this. But it's not necessary to use those blocks using the library browser, because if you go to the library browser, आपको पता होना चाहिए कौन सा block कहाँ मिलेगा, कौन सी library को access करना है. Otherwise, the second way is simply you can double click here and you can type this scope, right? Now there is a difference. If you are using the version older than 2016, you need to pick all the blocks from library browser only. You don't have any other option. But if you are using any other version after 2016 or 2015, then you can simply double click to search the components or the blocks, right? So if I search scope here, I can find the same block, right? There is no difference between these two blocks. So for that, what I'm doing, I'm not going to like pick all those blocks from the Simulink library browser. I'll be double clicking to search all of them, right? Now we have to create one model, and that too for the pulse generator, right? So this is the model for V is equals to IR. Let me close this model, and let's come back to this pulse generator, right? So now here we need the pulse generator first of all. So I'm searching simply pulse generator. If you guys have any doubts, you can ask me, okay? See, if I tell you the number of the students who enrolled for this electric vehicle workshop, those were plus 40 students, right? Plus 40 students who enrolled for this from WIT. And other than that, if we talk, then there were 10 to 20 more students from other different colleges, right? So out of those 50 to 60 students, only you five have joined, five or six maybe, right? And the main motive of us is to understand, right? अगर आप यहाँ पे 5 स्टूडेंट हैं, तो इससे मुझे इतना तो क्लियर होता है कि आप फिल्टर्ड स्टूडेंट हैं, आप पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, राइट? तो अभी ये अप्रोच अपनी हमें रखनी है कि हम अगर इस सेशन में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो हमें इसमें से कुछ सीख के जाएं. सो ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई डाउट नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता. दैट इज एनी हाउ नॉट पॉसिबल, राइट? सो इफ यू हैव एनी डाउट्स, इवन यू हैव कोई छोटा सा भी डाउट है ना, स्मॉल टू स्मॉल, यू कैन आस्क मी. मेरा मोटिव है कि आप 5 को एक्सपर्ट बनाते हैं. Fully expert I cannot make you within like 2 hours or 4 hours, but at least whatever knowledge I'm sharing here, you should grab at least 60 to 80% of that part, right? So for any doubts, most welcome. Let's get back to this. I search pulse generator. Now I want to see this pulse generator. So what I am doing, I'm taking a scope. Why I'm not taking the display? Because display में हम numeric output देख रहे थे कल, जैसे V equals to IR का था. Now if we talk about this pulse generator, it is very obvious that it's not going to give us the numeric output. We are going to receive the pulses, right? And to check those pulses, we have to open a graph where we can plot this. Give me a second. So what I was telling you, that pulses हमें generate करना है, that is why we should have this scope. So मैंने एक scope लिया है, and now it is asking number of input ports. तो अभी मुझे number of input ports only 1 चाहिए, क्योंकि मुझे सिर्फ इसी को plot करना है.
So I connected it simply, right? Then we have to change the things here. Let's say अभी हम इसको डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करने से एक प्रॉपर्टी बॉक्स ओपन होता है. Here we have to apply the values, right? So amplitude I am considering as 1. That means जो भी मैं पल्स दे रहा हूँ उसका जो पीक वैल्यू है, जो एम्पलीट्यूड है, वो 1 जाएगा. और मेरा जो पीरियड है वो 10 सेकेंड का सिमुलेशन पीरियड है, राइट? एंड अकॉर्डिंग टू दैट हम यहाँ पे जो पीरियड अप्लाई कर रहे हैं वो 10 सेकेंड्स का अप्लाई कर रहे हैं. Then pulse width, अभी मैं by default values आपको show कर रहा हूँ, I'm not changing anything, right? So 10 second, 10 second is the simulation time, 10 second is the period of the pulse, and the width is 5%, phase delay is 0. Let's apply this, click the run. After clicking this run, first it will ask you to save the model. Once you save, it will compile and run program, run the model, right? Let's wait for it. It's compiling right now, and once it is done, we can check the output simply by double clicking on this scope. So now I'm going to double click on this scope. I already double clicked. Let's wait for it. See, now if you see, मेरा simulation time भी 10 second है, starting from 0 to 10, right? And हमने जो pulse, जो period दिया था pulse का, वो 10 second का था. That mean मुझे 10 second में एक ही pulse required है, right? और उस 10 second में जो एक pulse required है उसके लिए हमने define किया 5% उसकी width है. So you can see here 0.5 second. 5% of 10 second is 0.5 second, right? तो 5% width उसकी high है and rest of the part is low. Now let's do another thing. I'm coming back to here, and let's make it to 90% pulse width to high and rest of the 10% to low. Let's simply click the run and then go to the scope. Now you will see the different graph. So this time it's high for 90% of the time. 90% of 10 second is almost 9 seconds. So for 9 seconds it is high, and for 1 second it is low. Now if I go to change the period, so period I am going to change it to, like, suppose let's say it is now 1. So that means मुझे जो अब एक पल्स जनरेट करनी है वो 1 सेकेंड की पल्स जनरेट करनी है, 1 सेकेंड, राइट? और उस 1 सेकेंड की पल्स को अगर मैं जनरेट करने जा रहा हूँ तो मेरा जो सिमुलेशन टाइम है वो टोटल 10 सेकेंड्स का है. तो ऑब्वियसली 10 सेकेंड्स में 10 पल्स से जनरेट होने वाली है. लेट्स सी दिस. सो ये 10 पल्सेस हमारी जनरेट हुई है, 1 2 3 4 5, इफ यू काउंट देम तो 10 पल्सेस हैं, जिसमें हमने ये भी डिफाइन किया है कि 90% का पीरियड है. इसका मतलब एक पल्स 90% के लिए हाई है और 10% के लिए लो है. फिर सेकंड पल्स सेकंड सेकंड में 90% हाई और सेकंड 10% के लिए लो है. ऐसे ही अगर हम उसकी पल्स विड्थ को चेंज करना चाहें, देन कैन वी कैन कम बैक टू दिस. लेट्स चेंज इट टू 50% नाउ. तो दैट मीन नाउ 10 seconds, 1 second is the period. That means 10 pulses, and out of those 10 pulses 50% period is high and 50% period is low. So इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर हम अपने स्कोप को 1 सेकेंड, मैंने रन पे क्लिक नहीं किया. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अपने स्कोप पे चले जाएंगे तो अब 50% पीरियड हाई मिलेगा, 50% पीरियड लो मिलेगा, और टोटल पल्सेस इफ यू स्टार्ट काउंटिंग तो ये 10 पल्सेस होंगी. So now tell me if you have any doubt, because ये बहुत important concept है while we are doing the part of the electric vehicles. नहीं समझ में आया है तो I can repeat it, but first I need the input from your side. Okay, that means it is very clear to you guys, no problem. Now let's get back to this. What I am doing now, एक और काम करते हैं कि हमने जो अभी पल्सेस जनरेट की हैं उन पल्सेस का अपोजिट आउटपुट देखते हैं. हमने क्या बोला है यहाँ पे कि 50% ऑफ द पीरियड इज हाई एंड रेस्ट ऑफ द 50% इज लो. इनिशियली हाई एंड बाद में लो, बिकॉज वी हैव डिफाइंड दिस 50% हाई एंड 50% low. Now what I am doing, I am taking one block, that is the not block. Okay, not this one. Let's take the logical operator. Logical operator. And then I am changing it to not. And let's connect it here. Now I need to plot this. तो उसी स्कोप में तो हम नहीं देख पाएंगे because that is already connected somewhere. तो इसी स्कोप में कहीं जाते हैं तो आपको सेकंड इनपुट ऑटोमेटिक दिख जा रहा है. इसके बाद if you click run
एंड हम स्कोप पे आते हैं रन करने के बाद, तो दोनों ही आउटपुट दो कलर अलग अलग कलर में है, बट आई एम नॉट एबल टू आइडेंटिफाई विच वन इज द 50% हाई 50% लो एंड विच वन इज 50% लो 50% हाई, बिकॉज हमने नॉट गेट लगाया तो ऑब्वियस उसका अपोजिट होने वाला है. बट आई वॉन्ट टू चेक बोथ ऑफ दम इन अ डिफरेंट ग्राफ, like we did yesterday the subplot, right? So what I'm doing, we have this settings icon here, configuration icon. Let's go to this and go to layout. Here we can change the layout to like this or like this. So it depends upon you, like how many rows and columns you are selecting. Right now, if we are going like this horizontally, that means one row, two columns. And if we go like this, then two rows, one column. So two rows, one column is my favorite one. So I'm selecting it like that only. And then we'll see the graph. 50% of the pulse is high for the first one without not gate, and then rest of the 50% is low. But if we go here, it's just opposite of the first one. That means the first 50% is low and the second 50% is high, right? Now if I have to apply the brakes, because we already have this pulse generator, right? And now if I have to apply the brakes, what we can do, we can take an AND block, not the AND block. Again, I'm going to take the logical operator block, and then let's take a constant block. I'm not changing anything in this pulse generator because we have to use the same pulse generator to increase the speed, to decrease the speed, right? Again and again, we cannot change the values of the given pulses. So it's not the suitable way if we give the pulse width to 1% high and rest of the time to low. That time it may take the break, but if I have to change the speed to high, or if I have to change the speed to low, I again need to change the values. But it's not possible to change the values in that pulse generator again. That is why I'm taking one other block, the constant block, and the other block, that is AND block, right? And now we are multiplying this pulse generator with the constant block, right? Actually, I'm not multiplying, I'm doing AND operation, right? AND operation and multiplication is a bit different. When we do the AND operation, that means we are multiplying bitwise logically. Okay, so let's apply this, and now I'm plotting this here in the graph at third number. And if we click run, now we'll be able to see how to apply the brakes. So let me change the layout again, and this time we need 3. So let's select 3 and click OK. So now you can see the actual output. Let me click the run button so that we can see the output. So the first one is the 50% high and the rest of the 50% is low. And second one is just opposite to that. That is 50% of the period is low and 50% of the period is high. And then third one is the 0. That means we have applied the brake. So this is the suitable way to create the pulse generator. If you guys have any doubts, you can ask me. Otherwise, we are going to create one model for AC to DC converters to charge your battery. What I told you, if you don't have any doubts, that mean आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ भी कि क्या हो रहा है. समझ में आ रहा है. Okay, no problem. Then let me open a slide to create that circuit. We have to go to this technology, right? EV and power converter. Let me open this PPT. And we have to create the new model. So let me save this model. I'm going to save this model with the name M2, because M1 we created yesterday, and that was I guess V is equals to IR. Now a pulse generator is done. That is the model M2, and now we have to create one new model. So I'll click new model once it is saved. New model, and let's close this. मुझे बल्कि नहीं बनाना है अपना सिस्टम, दैट इज व्हाई आई एम क्लोजिंग अदर पार्ट्स. नाउ इवन वी डोंट नीड दिस स्कोप, तो हमने उसको भी डिलीट कर दिया. Fine. Now we have to convert the AC voltage into DC voltage, right? So AC is like 220 volt or 320 volt or 430 volt of AC. That depends you are using single phase or three phase. And then we have to convert this into DC, right? So firstly, we need to understand this as well. So for onboard charging concept, first we are getting the AC input, which we need to convert to DC, right?
So to convert this to DC, we already know the concept of rectifiers, where we may use the full wave or the half wave. If we use the full wave rectifier, we all know that we need four diodes, and for the half wave, we need two diodes. So here, to reduce the cost of the circuit, and as well as we may have the higher current here, so diode will not work properly. That is why I will be using the thyristor. So to reduce the cost, I'm not going to use four thyristor. I'll be using two thyristors and two diodes. If the budget is enough for you guys, what you can do, you can use four thyristors. If you use four thyristor, you'll get the great result for AC to DC conversions. Now, once you get the DC, you have to regulate, because we know whenever we convert AC to DC from the rectifier, we may get the ripples. And to remove all those ripples, we may need DC to DC power inverters, or DC to DC power regulators, or isolators. Okay. So if we see this image here, we have a rectifier which is converting AC into DC. Now you can see a GIF image, an animated image here, where we are converting the AC into DC. So whenever we talk about the AC signal, that is the positive sinusoidal and the negative sinusoidal, right? So the complete cycle is starting from 0 to 360 degree. So this is the angle of this sinusoidal wave, right? For the positive cycle, it's completing 0 to 180, and for negative cycle, it is completing 180 to 360 degree. So if we see at 180 degree and at 0 degree and 360 degree, the amplitude is 0, but at 90 degree and at 270 degree, the amplitude is +1 or -1, right? So here it is +1, here it is -1, here it is 0, here it is 0, here it is 0. So now we have to decide, if we are going to convert AC to DC, which firing angle we are going to select. The firing angle may be the 0 degree or 10 degree or 90 degree or 120 degree or 180 degree or 270 or 360. That means any angle between 0 to 360 degree. Firing angle is nothing but the angle where we are trying to convert the AC into DC, right? For that particular period or for that particular angle, we are trying to convert the AC into DC. So first, let's understand this by the time period. If we check the frequency, we all know that the standard frequency for us is 50 hertz. And if I go to calculate the period, that is 1 by f. That means it's equals to 1 by 50 is equals to 20 milliseconds. So what is 20 millisecond? 20 millisecond is the time period to complete the positive cycle and the negative cycle, starting from 0 degree to 360 degree. Is it clear Yes. what I said? 20 Yes. millisecond is the period. Any doubts? Within any doubts? No, sir. No doubt, sir. Okay. So what Yes. is 20 millisecond? 20 millisecond is the period which we have to complete for positive and negative cycle of the AC sinusoidal waveform. So at 360 degree, it's 20 millisecond. And how we calculate it? 1 by 50. What is 50? F frequency. So we all know that the time period is equals to 1 by F. That means 1 by 50 is equals to 20 milliseconds, right? So this 20 millisecond is the whole period, starting from 0 degree to 360 degree. Now, if we go for 1 degree, we can calculate it. How? See, 360 degree is 20 milliseconds, then obvious 1 degree is 20 milliseconds divided by 360. Now, if we have to calculate for the 90 degree, then it should be 20 milliseconds divided by 360 multiplied by 90. Simple mathematics I am using here to calculate the values. Because why I'm telling you about this 90 degree, because once we'll be doing this, I am going to select the firing angle 90 degree only. Okay, so I am considering this 90 degree, and I tell you how to check the values for the 90 degree. Let's now go to the model. First, let's create the model, then we'll understand how to apply the firing angle and the other things. So first of all, we need to pick thyristors. I already told you, if your budget is like higher, then you can use four thyristors. And if your budget is little low, you can use two thyristors and two diode. But don't make your budget too low and you are taking four diodes. It will not work, because the current rating is so high for the electric vehicles when we are charging it. So I searched a thyristor, and we need two thyristor, two diodes. So I searched diode also.
let me first rotate this. So now to rotate this, we can do what? We can simply right click on this thyristor. We'll get the option of rotate and flip as well. And the second way is, this is the rotate and flip, right? The clockwise and the counterclockwise, and the flip block is there, the left and the right, up and down. But I'm just simply using it by command. Control R is the command to rotate this, and then we can also use Control I to flip it, right? Now if I have to take one more, Control C, and then let's drag one more. Okay, now we have to take two diodes, so simply I am searching diode, not this diode. See, we have to focus upon the library as well. That if we are taking any component like thyristor or whatever, we have to use the same libraries. So for thyristor, I use this library, that is electrical semiconductors and converter. So the same I'll be using for this diode as well. So let's click Control R to rotate this. Okay, and then Control C and the duplicate. Now we have to create a circuit for the rectifier, bridge rectifier. So let's connect all these. This one is the anode of thyristor, and this one is the cathode of thyristor, right? The top one. So now further, we have to connect the pulse generator with the gate of the thyristor. This is the gate, right? This one is gate, this one is gate. So we need two pulse generator. I'm taking one and then taking a duplicate for other one. So now we have to connect this pulse generator with the thyristor. But can you see, when I'm trying to connect, it's not connecting with it. Neither it's connecting here, nor here, nor here. Right. So why? Because see, once we pick the pulse generator, it is from any other library, and then we pick this thyristor, it is from any other library. If we try to find out the pulse generator from the same library we pick the thyristor, it's not possible. And also we cannot directly connect the pulse generator to thyristors, although we know we have to give the signal to the gate of thyristor of the pulses, but still we're not able to connect it. So what I'm doing, I am taking one gate driver IC in between. So let's pick a gate driver. So now it is important how to connect the signals, right? Just give me a second, let me adjust myself. So now I'm connecting this gate. So let me flip it. Control R and Control I, and then we have to connect it, the pulse generator, with this. Okay, and this one with this. But here it's not possible to connect. I'll tell you why. Control D. But let's take one more pulse generator. Not Control D. Sorry, it should be Control C and then a duplicate. Second pulse generator I'm connecting here. Now we have to connect this pulse generator here, and we have to connect this pulse generator here, but it's again not possible because this is the block from power system library, and this one is the block from the Simulink library, right? So we need a Simulink to PS converter. What I said, this is the block from Simulink, and this one is the block from power system PS library. So we cannot connect both of them. You can even see if I am trying to connect, it's not possible to connect. So what we need to do now, we need to use one Simulink to PS converter. So I'm connecting Simulink to PS converter. So now it will be feasible to connect this here and this one here. And let's take one more Simulink to PS converter. So we are done with this. Now we have to take a AC voltage source where we have to convert like the AC to DC. So let's search AC voltage source. So this AC voltage source I am going to connect here, the positive to here, in between one thyristor and one diode, and negative to here in between another thyristor and another diode, right? Now we have to connect this cathode with this, the source here, sorry, Control Z, the source of this gate driver to here with the cathode of thyristors,
and then this source to cathode of the thyristor. So this way we have completed this power converter or bridge rectifier circuit. Now we have to check the input voltage. So we are taking one voltage sensor to measure the voltage across the input. Although we'll give the input signal by ourselves, but still I want to check that output voltage or input voltage in the graph. Now we have to check the output across the thyristor and diode. So let me take a resistor as a load, control R. We can connect it like this. We have to connect here at this point, and here we are creating the bridge. So that means we need to connect it here, right? Then now we have to further calculate what. Now we have to calculate the output voltage, and to calculate the output voltage I'm connecting a voltage sensor again across this load. So plus 2 here and minus 2 here, right? Let me flip this first. Now this wire is not connected, so let's connect it properly. Okay, now this is the output signal, the output voltage, and this one is the input voltage. So we have to check the output and the input in the scope. So let's connect a scope here, and this scope I'm taking 4 inputs. Why? Because first I'll connect the input voltage, then I'll connect the pulse generator 1, then I'll connect the pulse generator 2, then we'll check the output voltage. Input voltage we are giving as a AC, pulse generator we are giving to the gate driver to thyristors to convert your AC into DC, and then according to that we'll get the DC output, which we can check from the V out. That is why I used 4. Okay, then if you want to connect it like this, you can directly connect here, but I'm not able to connect it, right? Why? This one, if we talk about this one, this is the block from power system, and this is the block from Simulink. If you remember, this is the block from Simulink and this was the block from power system. So we used what? Simulink to PS converter in between, because it was Simulink, it was PS. So Simulink to PS converter. Now it is opposite, as it is power system and as it is Simulink, so we need to convert PS to Simulink converter. So let's use PS to Simulink converter. Let's connect it here. Let's connect it here. Let's use one more PS to Simulink converter, and let me connect it here, and we have to connect it at the first point, right? Then this is the pulse generator which I can connect here, pulse generator 1. Okay, and this one is the second pulse generator which I can connect here. So if I go to show you the whole circuit, this is something like this, but you know it's quite a messy one, so I'm not connecting all the things with the scope directly. This is also the way, this is the correct way, no problem with it, but it is making the circuit a bit messy, so that is why I'm not connecting it, right? And don't think ये connected नहीं है, जैसे दूर से हमें zoom out करने पे दिख रहा है कि connected नहीं है. If you zoom in, you can see it's connected, right? So what I was telling you, हम directly connect कर सकते हैं, there is no problem, but थोड़ा सा और आपको सीखने को मिलेगा इस चीज से. But I'm going to connect, मैं यहाँ पे connect कर रहा हूँ एक go to tag, go to and from. जैसे हम टैग लगाते हैं किसी भी चीज पे, अगर हमने सिमुलेशन पे पहले आपने काम किया है तो आपको पता होगा टैग लगाते हैं जिससे हम वायरिंग पार्ट को थोड़ा सा रिड्यूस कर सके. So that's what I'm using here. Let's connect the go to block. Let's open this and let's change the name of the tag to V out and let's apply this. अब मुझे यही go to block इसके साथ कनेक्ट करना है, बट जब हम go to block को इसके साथ कनेक्ट करेंगे, that time we need to connect the from, go to and from. Okay, so to get the from block आपको इस ब्लॉक पे आना है. थोड़ा सा ध्यान से देखना, जब मैं इस ब्लॉक पे आऊंगा तो आपको राइट साइड पे एक छोटा सा एरो दिखना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे मैं अपने कर्सर को उसके पास लेके जाऊंगा वो हाईलाइट हो जाएगा. जब ये हाईलाइट हो जाए तो आप इसमें क्लिक करके एक ब्लॉक ड्रैग कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द फ्रॉम ब्लॉक. दिस इज द गो टू एंड दिस वन इज नाउ फ्रॉम ब्लॉक. सो लेट्स टेक फ्रॉम ब्लॉक हेयर और इसको हम डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं. इससे क्या होगा, मेरी जो वायर्स हैं वो वायर्स मतलब मेसी नहीं होंगी, मेरा जो मॉडल है वो कॉम्प्लेक्स नहीं होगा. Now let's take one more go to block for this input voltage and let's just connect it here. Double click and change the tag to V input. Apply. Okay. And then we have to connect 2 more tags for the P1 and the P2. So I'm taking one more go to block.
Let's copy and paste. Now I'm connecting it here, connecting it here. Now if you see, तो ये रेड कलर में जा रहा है. रेड कलर ये इंडिकेट कर रहा है कि कोई ना कोई एरर है. ठीक है, और ये येलो कलर है, मतलब कोई ना कोई वार्निंग है. मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे एरर क्या है. हमने दो गो टू ब्लॉक यूज किया जिनका टैग सेम है, इसलिए ये हमें एरर दे रहा है. तो अभी हम टैग चेंज करते हैं, इसका P1 करते हैं, पल्स जनरेटर 1. तब आप देखोगे इसमें अब कोई एरर नहीं है, बट इसमें अब वार्निंग है. इसमें भी अब वार्निंग आ रही है. इसको भी मैं पहले V इनपुट कर देता हूँ. ये V, सॉरी नॉट V इनपुट, P2, पल्स जनरेटर 2. तो स्टिल इट्स गिविंग द वार्निंग. अब ये सब वार्निंग क्यों दे रहे हैं और ये वाला वार्निंग क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि इसका गो टू और फ्रॉम पार्ट कंप्लीट है, जबकि इनके हमने सिर्फ गो टू ब्लॉक लिए हैं. तो अब मैं इसका फ्रॉम ब्लॉक ले लेता हूँ, इसको हम यहाँ भेज देते हैं. इसमें भी अब कोई एरर नहीं रहेगा. इसका भी हम फ्रॉम ब्लॉक ले लेते हैं, इसका भी हम एक फ्रॉम ब्लॉक ले लेते हैं. अब चारों को हम ले जाके यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं. तो मुझे अब कनेक्ट करना है V इनपुट एट फर्स्ट पॉइंट, P1 at second point, and P2 at third point, that is the pulse generator 2. Okay, so this way now we are done. And now let's come back to this. हमें अब थोड़ा सा अपनी पैरामीट्रिक वैल्यूज को चेंज करना है, राइट. पैरामीट्रिक वैल्यूज बोले तो लेट्स ओपन दिस AC voltage source and I'm changing the peak amplitude to 325 volt, or let's say 230 volt. Okay, let's apply this. Phase shift is 0 for now and the frequency is 60, not 60 hertz. Let's make it 50 hertz. क्योंकि अगर हम 60 हर्ट्ज करते हैं तो अगेन वी नीड टू कैलकुलेट दिस वैल्यू इन अदर वे, बिकॉज दैट टाइम इट शुड बी 1/60. ओके, सो हमने इसे 1/50 के अकॉर्डिंग 50 हर्ट्ज से असाइन किया. तो इसका मतलब 20 मिली सेकेंड्स का मेरा अभी भी पीरियड है 360 डिग्री को कंप्लीट करने के लिए. नाउ लेट्स ओपन द पल्स जनरेटर. मैं सिमुलेशन को रन कर रहा हूँ 10 सेकेंड्स के लिए, ध्यान देना. अभी पीरियड हम जो अप्लाई कर रहे हैं वो हम अप्लाई करेंगे अब किसके लिए? 1/50 के लिए, क्योंकि मेरी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है. दैट मीन 1/50 इज द पीरियड. एंड देन हम पल्स विड्थ की अब बात करेंगे. तो पल्स विड्थ का हम कितना लेके चलेंगे? दैट इज, लेट्स गेट बैक टू दिस. 90 डिग्री का हम क्या ले रहे हैं? फायरिंग एंगल ले रहे हैं, ऑब्वियस, राइट. तो 90 डिग्री जो हमारा, अगर हम साइनोसॉइडल की बात करें तो 90 डिग्री 360 का कितना परसेंट हुआ? ओनली 25%. इफ वी टॉक अबाउट 100%, दैट इज 360 डिग्री. Then if we talk about 50%, so that is 180 degree. Now if we say 25 degree, that is, sorry, 25%, that is 90 degree. I hope it is very clear to you. It is simple mathematics. 360 का हाफ किया तो 180, 50%, और 180 का हाफ किया तो 90 डिग्री 25%. सो अब हम 25% की अपनी पल्स विड्थ को एज्यूम कर रहे हैं, और इसके लिए नाउ वी हैव टू अप्लाई द फेज डिले. तो फेज डिले को मैंने कैलकुलेट किया है 5.55 e minus 5. That means 5.55 10 to the power minus 5. And how I calculated this? Let's get back to this window. What I said, 1/50 is your period. That is equals to 0.020 seconds. Okay, and if you check it in milliseconds, it is 20 milliseconds. So ये जो 0.020 seconds में आ रहा है. Now if I check 0.020 is for 360, and if I divide it by 360, it will be for 1 degree. And इस पूरे को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 90 से, so that will be for 90 degree. I hope it is clear कि मेरा जो 0.020 1/50 50 हर्ट्ज है वो मेरा कितना किसका पीरियड है? 360 डिग्री साइनोसॉइडल वेवफॉर्म का है. If I have to calculate for 1 degree, what I am doing, 0.0200 divided by 360, and if I have to calculate for 90 degree, I am multiplying this. So this way I am getting this value 0.0050. और इसी को मैं यहाँ पे जब सेकंड्स में लिखने जा रहा हूँ तो आई एम राइटिंग इट 5.55 e 10 to the power minus 5. e minus 5 मतलब 10 to the power minus 5 multiplied by 90. Okay, now let's apply this value here and then let's go to pulse generator 2. ये मेरा फेज डिले था. क्यों? क्योंकि मैंने अपना जो फायरिंग एंगल लिया है वो 90 डिग्री लिया है. इतना मैंने फेज डिले लिया है. अब अगर मैं बात करूंगा नेगेटिव पल्स के लिए, क्योंकि ये जो पल्स जनरेटर 1 था ये पॉजिटिव के लिए था, अब पल्स जनरेटर 2 हम नेगेटिव के लिए बनाएंगे. तो नेगेटिव के लिए भी 90 डिग्री का ही फायरिंग एंगल होगा. इसका मतलब यहाँ से और यहाँ तक का फेज डिले कितना हो जाएगा? सेम 90 मल्टीप्लाइड बाय 5.55 e to the 10 to the power minus 5, यहाँ से और यहाँ तक का. बट जब मैं सेकंड नेगेटिव पल्स की बात करूंगा तब तक पॉजिटिव पल्स हो चुकी होगी, तो उतना फेज डिले मुझे और ऐड करना होगा. सो व्हाट वी कैन से कि टोटल 360 का जो पीरियड है वो 1/50 है, तो हाफ का कितना हुआ? 1/50/2, राइट. तो उसी 1/50/2 को हम क्या बोल रहे हैं कि
फेज डिले 2 में ऐड करके चलेंगे। तो हमने पीरियड हमने कितना लिया है इसके लिए देख लेते हैं एक बार। पीरियड हमने लिया है 1/50। क्यों लिया है? क्योंकि मेरा 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है, तो 1/50 इज द पीरियड। एंड पल्स विड्थ अगेन मेरा 25, यानी कि 25% मतलब 90 डिग्री का ही फायरिंग एंगल है, बट दिस टाइम इट इज 90 मल्टीप्लाइड बाय 5.55 E-5, जो कि हमारा 90 डिग्री है, प्लस अगर आप वापस आए दोबारा से समझने के लिए, तो यहाँ से 0 से 180 तक का पॉजिटिव साइकिल कंप्लीट है। नेगेटिव साइकिल के लिए ये फेज डिले भी ऐड करना होगा, विच इज फ्रॉम 0 to 180 degree. That mean we have to now define 1/50/2. So 1/50/2 is the period for 0 to 180 degree, or also you can say it is 10 milliseconds, right? So it is your choice if you are writing it 10 milliseconds or if you are writing it 1/50/2. But make sure when you are writing, you have to write in the seconds, not in milliseconds. Okay, now let's apply this value. Okay, and then let's go to the register where we have to apply 1 ohm only, and then let's run the simulation. If we go to run the simulation, we need to check the scope, so it will create output. Okay, there is an error. Why? Because we have not connected the ground. When we are using this AC voltage source, we need to give it a ground. So let's connect a ground, that is called electric reference. And whenever we use the electric reference, we also need to use the solver configuration. Solver configuration is basically to solve your model. If you are not using the solver configuration, तो आपका जो मॉडल है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा. Now it's done. Let's click the run. Still there is an error here in thyristor, untitled solver configuration error. और कहाँ पे एरर है एक बार में चेक कर लेते हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो अभी सॉल्वर कॉन्फ़िगरेशन लिया है उसको अभी मैनेज नहीं किया, तो उसको एक बार मैनेज करते हैं. हाउ टू मैनेज? जो ये सॉल्वर कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ से मैनेज होगा, ऑटो ओडी E23T. लेट्स क्लिक हियर, सेटिंग्स आइकन हमको दिखेगा, इसको ओपन करते हैं. और इसको हम अप्लाई करते हैं वेरिएबल स्टेप में. सॉल्वर चेंज करते हैं डाइक. सॉल्वर डिटेल्स में 1E-3, दैट्स फाइन, एंड अप्लाई. ओके, लेट्स मेक इट फॉर 1 सेकेंड. एक बार 1 सेकेंड के लिए सिमुलेट करके देखेंगे इसको. एक बार डाइक को फिर चेक करता हूँ 1 सेकेंड में कोई चेंजेस हुआ. Yes, 1E-3 and 1 stop time. That's fine. Now let's see if we have any error. तो अभी कोई एरर नहीं है, रन हो रहा है. स्कोप को ओपन कर सकते हैं, हमें लाइव डेटा दिखना स्टार्ट हो जाएगा. किस तरह से हमें आउटपुट मिल रहा है 1 सेकंड के पीरियड में, AC टू DC कैसे कन्वर्ट हो रहा है. बट हमने टोटल 4 इनपुट्स यहाँ पे दिए हैं, आउटपुट में 2 ही दिख रहे हैं. तो लेट्स गो टू this and change the layout to 4 rows in 1 column, my favorite one. And now we can see ऊपर मेरा AC सिग्नल जा रहा है, नीचे हमारी पल्स जनरेटर है 90 डिग्री फायरिंग एंगल, उसका अपोजिट 180 के बाद 90 डिग्री, एंड नाउ इट इज कन्वर्टिंग इनटू DC. और मुझे पता है अभी हम ये आउटपुट को वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं, हमें समझ में भी नहीं आ रहा है. तो जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा ये ऑटोमेटिकली उसको स्केल कर देगा. स्केल करने के बाद नाउ इफ वी सी, हमने जो अपना AC इनपुट लिया था दैट वाज 220 वोल्ट ऑफ एम्पलीट्यूड, राइट. अब मैं वापस स्कोप में आता हूँ, और स्कोप में आप देखेंगे कि मेरा जो AC इनपुट है वो 220 है. थोड़ा सा इसको स्ट्रेच करते हैं ताकि हम इसको और अच्छे से बेटर वे में देख पाएं. तो स्ट्रेच मुझे हॉरिजॉन्टली करना है, उसके लिए हम इस पॉइंट पे आएंगे. इस पॉइंट पे आने के बाद ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच को चूज करेंगे, एंड देन इसके बाद यहाँ पे आके हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच का एक और टूल चूज करेंगे, जिसमें हम क्लिक करने के बाद अपने कर्सर को चेंज होता हुआ देखेंगे. कर्सर इज नाउ चेंज्ड. तो यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन मुझे स्ट्रेच करना है, मैंने सेलेक्ट कर लिया. नाउ वी कैन सी इजीली कि ये मेरा AC इनपुट 220 वोल्ट का हमारा 230 वोल्ट का हमारा एम्पलीट्यूड है. फेज जनरेटर, पल्स जनरेटर जिसमें 1 का एम्पलीट्यूड है, और
ये हमारा 90 डिग्री पे जाके इस पॉइंट पे जाके अपनी पल्स को जनरेट कर रहा है, राइट। और फिर दूसरा वाला हमारा इस पॉइंट पे आते हैं तो नेगेटिव साइकिल में जाके अपनी पल्स को जनरेट कर रहा है। और अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ से और आप यहाँ तक का अगर आप चेक करेंगे तो डीसी में कन्वर्ट हो रहा है। फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट आपको डीसी में मिल रहा है। तो दैट मीन्स जितना आप फायरिंग एंगल ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको डीसी का आउटपुट मिल रहा है। सो डू यू गाइस हैव एनी डाउट्स? इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी। No doubt, sir. नो डाउट, दैट्स गुड। दैट मीन अब मैं आपसे अगर बोलूं कि इफ यू हैव टू चेंज द फायरिंग एंगल फॉर सम अदर वन, लाइक अब अभी एक बार चेंज करके भी देख लेते हैं। नाउ लेट्स से इफ आई एम अप्लाइंग इट टू 45 डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट कि 45 डिग्री के लिए पल्स विड्थ कितना होगा। तो जैसे 360 के लिए 100% है, 180 के लिए 90%, 50% हुआ, हाफ कर रहे हैं जस्ट, ओके, सिंपल मैथमेटिक्स। और 90 के लिए 25 हुआ। तो ऑब्वियस when I'm going to apply for 45 degree, it should be 12.5, right? And here we need to multiply this by 45 only. Apply, and then let's come back to other pulse generator. Also here I'm doing it 12.5, and here we have to multiply it by 45 only. Apply, okay. And now let's run. Meanwhile आप scope को open कर सकते हैं, आपको live changes होते हुए यहाँ पे दिखना start हो जाएंगे। तो ऑब्वियस 90 डिग्री के फायरिंग एंगल के साथ डेटा डिफरेंट था और 45 के फायरिंग एंगल के साथ डेटा डिफरेंट होगा। और अभी तो हमने जो अपना लोड अप्लाई किया है अपने थायरिस्टर्स पे वो हमने 1 ओम अप्लाई किया है। इफ यू चेंज द लोड तो आपको आउटपुट पे और भी चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से अब मेरे पास कुछ 45 डिग्री के लिए फायरिंग एंगल के लिए कुछ आउटपुट इस तरह का जनरेट हो रहा है। और पल्सेस भी क्योंकि उसी तरह से हमारी अप्लाई हो रही है। सो इफ यू डोंट हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क, अदरवाइज वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। No doubts, that's good. Can you please all open your camera so that we can have one picture? I'm also turning on. You all have to turn on your camera. Diksha, Diksha, are you there? Because yesterday also you were not turning on your camera, and yeah, okay, that's fine. Okay, give me a second. Cheese, everyone. Good. Okay, now you all can turn off. Now we'll take a break of 3 to 4 minutes, and then we'll start the session again. Okay. So it's 2 o'clock 1 minute. So we'll start it at 2:06.
Am I audible? Diksha, am I audible? Yes, sir. Okay. Okay, now we are doing the next part of this electric vehicle. So firstly, let me save this model. Okay, so this model we created for the power converter, which we converted from AC to DC, right? And now, if we have to convert the DC to DC, sometimes it may be possible you have to increase, you have to boost, or sometimes it is also possible that you have to decrease the DC power. So that time you may use the DC power inverters, or you may also use the DC converters or isolators or regulators, right? So now we are not considering that circuit because almost part of the battery charging circuit or the onboard chargers is completed. Now we are just going to focus upon the part of the electric motors, how we can control the electric motors with this MATLAB, right? So let's create the new model now, and let's close it. Okay. So first of all, but what we are doing, we are now doing for the electric motor. So first we need to search a DC machine. So I'm searching it, DC machine here. Okay. Now if we talk about all these, all the ports of this DC machine, then TL is called the torque load, where we can apply the torque. Okay. कि टॉर्क अप्लाई मतलब कि आप आपका जो व्हीकल है आप उस पे कितने न्यूटन पर मीटर का टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं, और क्या उसकी मैक्सिमम रेटिंग हो सकती है, क्या मिनिमम रेटिंग आपके पास है, उसके बीच में अगर आप टॉर्क वैल्यूज को चेंज करते हैं तो मोटर की स्पीड में क्या चेंजेस आने वाले हैं. We already know if we increase the torque of the motor, definitely the speed of the motor decreases. This is the biggest challenge. जब भी हम हिल क्लाइंब करते हैं या किसी भी व्हीकल को स्टार्ट करते हैं, या नॉर्मली व्हीकल को भी ना बोलें, अगर हम किसी भी मोटर को स्टार्ट करते हैं, जैसे हम मोटर की बात करें तो हमारे घर में पंप्स होते हैं, वाटर पंप्स. अदर देन दैट हम अब हमारे घर में फैन सबके पास ही होता है, राइट? तो जब भी हम फैन को स्टार्ट करते हैं तो हम ऐसा नहीं देखते कि फैन को स्टार्ट करते ही फैन जो है टॉप स्पीड में आ गया है. नो, इट टेक्स सम टाइम टू गेट द टॉप स्पीड, राइट? तो उसको टॉप स्पीड में आने के लिए एक टाइम रिक्वायर्ड होता है, और जब भी हम किसी मोटर को स्टार्ट करते हैं तो उसका जो करंट होता है वो बहुत हाई होता है. करंट मतलब वो जो करंट एब्जॉर्ब करता है वो बहुत हाई करंट होता है. That is why we connect either star delta or delta star connections to control the start current, right? और नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द टॉक. सो लेट्स से कि हम एक पंप को ऑन कर रहे हैं, और उस पंप को हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, पानी को खींचने के लिए, राइट? जो हम अपने घर में भी यूज करते हैं. और पानी का जो प्रेशर है वो बहुत कम है, इसका मतलब मुझे बहुत ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मेरी मोटर पे प्रेशर पड़ रहा है. और अगर पानी का प्रेशर ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा है तो मेरी मोटर के ऊपर जो टॉर्क है वो बहुत कम है. So in this way, we have to change the value of the torque load here, which we can apply by changing the variables, by changing the constants, right? And then we will see what output we are getting, how we can see that the speed is increasing or the speed is decreasing, right? So what are the parameters here? What are the ports here? TL is the torque load, A plus and A minus is the armature, F plus and F minus is the field. And if we talk about the M is called the measuring port, right? Now measuring port is very important because if we use a DC machine here like this model, so M से हमें जो output मिलेगा, that is not only speed, we'll receive the output of the speed as well as the armature current, the field current and the torque, right? Whatever torque you are applying, you can check at the measuring port itself. अभी जो हम ये डीसी मशीन यूज कर रहे हैं, इसको हमें पहले चूज करना होगा कि हम कौन सी डीसी मशीन को यूज कर रहे हैं. सो लेट्स डबल क्लिक ऑन दिस, एंड देन वी हैव अ प्रीसेट मॉडल ऑप्शन हियर.
एंड उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं कितने एचपी की आपको मोटर को यूज करना है, एचपी मीन द हॉर्स पावर, और उसका जो आरपीएम है वो कितना होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग फील्ड वोल्टेज एंड आर्मेचर वोल्टेज कितना होना चाहिए, दैट वी कैन डिसाइड, राइट। सो अगर हम किसी एक अच्छे व्हीकल की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट द टाटा इन इंडिया एंड द टेस्ला इन ऑल ओवर द ग्लोब, तो ये भी आज की डेट में 70 किलोवाट तक की अच्छी मोटर्स को यूज कर रहे हैं टू गेट द हाई स्पीड हाई टॉर्क at all the conditions, whether you are running at the normal road, plain road, whether you are climbing the hill, or if there is not a proper road, at that time also that motors are behaving very well. For now, when we are doing the model for dc motor or dc machine control or the electric motor control, what we are considering कि हम एक मोटर यूज कर रहे हैं 5 HP 240 वोल्ट 240 वोल्ट 1750 RPM, and then field is 300 volt. So 1750 RPM, we all know that it's 1750 revolution per minute. So let's select this one and click OK. Now the thing is कि आपको इस चीज का मुझे आई गेस मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मोटर्स कैसे वर्क करता है, स्टेटर होता है, रोटर होता है, कॉइल होती है, करंट पास होता है, ईएमएफ जनरेट होता है, उसकी वजह से रोटेशन आता है, ये सब कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी पता है आर्मेचर एंड फील्ड के बारे में, ऐसा मैं कंसीडर कर रहा हूँ, तभी मैं इस चीज को आगे लेके चल रहा हूँ. नाउ इफ वी हैव टू कैलकुलेट the speed after applying the torque, so first we need to give the voltage source to this A plus and A minus. As it is a DC machine, so obviously we have to give the DC voltage source. So let's search DC voltage source. And then I am connecting, let me check another one also, because we have to pick all from the same libraries. No, that is fine. We have to use this one only. This I'm connecting with the armature plus, and this I'm connecting with the armature minus. Now we need one more DC voltage source for the field. Not this one. Let's take it from here. For the field plus and the for field minus. Now we have to apply the values. So let's check the values here. 240 volt is the armature and 300 volt is for field. So let's apply the same. That is 240 amplitude for armature and 300 for field. Now let's take a constant block which I'm connecting with a torque load. Okay, I'm applying only one torque. I'll give you the idea कि कितना maximum torque हम इस machine पे apply कर सकते हैं. But before that, first let's complete this model. अब मुझे यहाँ से चार output मिलने वाले हैं. As I told you, the first is the speed, the second one is the armature, and third one is the field, and the fourth one is the torque. Right? अब एक single port और चार output. So what we can do? We can use bus selector. एक गोली और तीन आदमी, ऐसा कुछ, राइट. तो उसके लिए मुझे नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक फोर आउटपुट्स. अब मैं अगर इस बस सेलेक्टर पे डबल क्लिक करूं, तो पहले हम इस बस सेलेक्टर पे नॉर्मली देखेंगे, तो इनपुट साइड पे तो ऑब्वियसली वन पोर्ट है, बट आउटपुट साइड पे ये दो पोर्ट दे रहा है, जबकि मुझे आउटपुट पे भी चार सिग्नल रिक्वायर्ड है, स्पीड, आर्मेचर, फील्ड एंड टॉर्क. सो इफ वी डबल क्लिक, अब देखते हैं कि वो कैसे चेंज होगा. इफ यू सी, यहाँ पे हमें दो सिग्नल मिल रहे हैं, राइट, आउटपुट साइड पे. इनपुट साइड पे अभी कोई सिग्नल नहीं है, तो लेट्स डिलीट this as well. Okay, now it is giving us the error, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि बस सेलेक्टर आपको एक भी सिग्नल ना दे. ओके, तो लेट्स कैंसिल इट. फर्स्ट लेट्स कनेक्ट दिस हियर. नाउ इफ यू डबल क्लिक, अब हमें दिख रहा है कि इनपुट साइड पे मेरे पास टोटल 4 सिग्नल्स आ गए हैं, जो कि पहले नहीं थे. लेट मी शो यू अगेन. If I delete this and if I double click, there is no signal in the input side, right? And if I connect this, now we can see we are getting 4 signals, although it's one, but the output is for 4. So ये आपको चार आउटपुट सिग्नल देगा, बट आउटपुट साइड पे भी दो हैं, इसलिए दोनों को रिमूव करते हैं और उसके बाद वन बाय वन सबको इंपोर्ट करते हैं. इट्स नॉट मैंडेटरी टू चेक ऑल द फोर पैरामीटर्स. अगर आपको सिर्फ स्पीड देखनी है तो आप सिंगल कर सकते हैं, आर्मेचर, फील्ड, टॉर्क सब देखना है तो आप चार ले सकते हैं, दो ले सकते हैं, तीन ले सकते हैं, आपकी चॉइस है, बट आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, राइट. अप्लाई करेंगे तो नाउ वी कैन सी कि बस सेलेक्टर ने मुझे टोटल चार आउटपुट साइड पे दे दिए हैं, चार पोर्ट बना दिए हैं, राइट. और अब इन चार पोर्ट्स को हम कहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं. नाउ वी कैन टेक ऑल दीज पोर्ट्स. वन सेकेंड.
अभी मैं एक स्कोप ले लेता हूँ जहाँ पे मुझे इन्हें प्लॉट करना है, ग्राफ में हमें इनको देखना है। ओके, और इस स्कोप में मुझे 4 इनपुट चाहिए होंगे ऑब्वियस। तो सेकंड इनपुट इज दिस, थर्ड इनपुट इज दिस एंड फोर्थ इनपुट इज दिस। इसको भी थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर लेते हैं ताकि एडजस्टमेंट अच्छा हो जाए। ओके, नाउ दिस इज अ स्कोप एंड इन दिस स्कोप इफ वी सी मेरे पास टोटल 4 ग्राफ प्लॉट होंगे, स्पीड, आर्मेचर, फील्ड एंड टॉर्क का, राइट। अब जो मैंने कांस्टेंट टॉर्क लोड अप्लाई किया है वो 1 है। इसको हमने रन किया है 10 सेकेंड्स के लिए। सिंपली एक बार रन पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट मुझे आने वाला है। अभी तो ये एरर देगा। क्यों? क्योंकि हम जब भी सिम पावर सिस्टम के किसी भी टूल को, नॉट टूल, सिम पावर सिस्टम के कोई भी कंपोनेंट या मॉडल को यूज करते हैं, तो ब्लॉक को यूज करते हैं, तो हमें एक सॉल्वर कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा डिफरेंट ले रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं पावर जीयूआई। तो आपको सर्च करना है पावर जीयूआई। इसको सर्च करने के बाद आपको सिर्फ प्लेस करना है, इसको कहीं पे भी कनेक्ट नहीं करना है। इसमें कनेक्ट करने का कोई ऑप्शन भी नहीं है, बस ये आपकी स्क्रीन पे होना चाहिए, तभी आपका सिमुलेशन रन होगा। लेकिन मुझे ये डिस्क्रीट सिग्नल्स के लिए वर्क कराना है, तो इसको हम डिस्क्रीट में चेंज कर देते हैं। दैट्स इट, नथिंग एल्स। इफ वी गो टू रन नाउ, अब ये रन होगा और मुझे मेरा आउटपुट स्कोप में मिलने वाला है। उसके लिए हमें स्कोप को डबल क्लिक करना है। तो पहले इसे कंपाइल होने देते हैं, लेट इट आइडेंटिफाई द एरर्स। इफ देयर इज नो एरर देन वी कैन चेक द आउटपुट एज वेल। So let's wait for it. Now it started running. Let's double click on the scope. अब स्कोप में अगेन ये कुछ तो दे रहा है, आउटपुट तो दे रहा है, बट समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर से हम एक्सेस पैरामीटर में जाएंगे और अपना फेवरेट यूज करेंगे, जो मेरा फेवरेट है। ओके पे अप्लाई करते हैं। नाउ वी कैन सी इट्स गिविंग अस द 4 डिफरेंट plots where we can see when we are applying the torque load of 1, the speed is round about 230 to in between 200 and 250 exact, मुझे नहीं पता, अभी देखेंगे exact कैसे देख पाएंगे, but for now I'm considering it 230। and then the armature current at start it's almost about 100 ampere and then it's zero। फील्ड करंट इज ऑलवेज कांस्टेंट टू जीरो। एंड टॉर्क जो हमने अप्लाई किया वो हमने अप्लाई किया 1 के अप्रॉक्स, तो वो 1 के अप्रॉक्स जाके कांस्टेंट हो गया है। और उसके अकॉर्डिंग मेरी जो स्पीड है वो कांस्टेंट हो चुकी है, कहाँ पे जाके 230 के आसपास। अब अगर हम एक चीज पे नोटिस करें तो हमने जो मोटर यूज किया था वो 1750 आरपीएम का यूज किया था, राइट। बट जो आउटपुट साइड पे स्कोप मुझे दिखा रहा है वो 220 और 230 या 240 के आसपास दिखा रहा है ओनली, जबकि हमने टॉर्क अभी 1 का अप्लाई किया है। तो ये तो गलत हो रहा है। पहले तो ये समझते हैं कि टॉर्क जो 1 अप्लाई हो रहा है वो कैसे अप्लाई हो रहा है, कितना मैक्सिमम टॉर्क हम अप्लाई कर सकते हैं, और अगर हम मैक्सिमम टॉर्क अप्लाई करते हैं तो मोटर की स्पीड में क्या चेंजेस आने वाले हैं। उसके लिए हम अपने इस विंडो पे वापस आते हैं। ओके, आपको पता होगा एक फॉर्मूला होता है, पावर इज इक्वल्स टू डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाय टी, राइट, वेयर P इज पावर एंड W इज स्पीड एंड T इज द टॉर्क, राइट। तो मुझे अगर पावर कैलकुलेट करना है या टॉर्क कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या पता होना चाहिए? अगर मुझे टॉर्क कैलकुलेट करना है तो P और W पता होना चाहिए। अगर मुझे पावर कैलकुलेट करना है तो W और T पता होना चाहिए। अभी मैं टॉर्क कैलकुलेट करने जा रहा हूँ कि मेरी जो मोटर है इसके लिए हम कितना मैक्सिमम टॉर्क अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे अभी फिलहाल ये पता होना चाहिए कि इसमें इस पर्टिकुलर मोटर में हमारा पावर कितनी है। तो उसके लिए हम इस मॉडल में वापस आएंगे, डबल क्लिक करेंगे, पावर कितनी है 5 HP, 5 हॉर्स पावर, राइट। तो यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, ऐसा करते हैं, इसको हम कहाँ बनाते हैं, स्क्रिप्ट विंडो में चेक करते हैं, क्योंकि मैं आपको यहाँ कैलकुलेट करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको स्टेप बाय स्टेप यहाँ चेक करते हैं। क्लोज ऑल and then CLC। Now the power is 5 HP, 5 into 746 watt में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। 1 HP is equals to 746 watt, तो 5 HP is equals to 5 into 746। Now W equals to 2 pi n, 2 into pi into n। अब ये एरर देगा क्योंकि इसको n नहीं पता है, तो n पहले ही डिफाइन कर देते हैं। n कितना है 1750 RPM, राइट। एंड देन let's calculate the T। okay, so T is equals to, फॉर्मूला क्या बताया आपको, P is equals to W by T, तो obvious T is equals to P divided by W। okay, इसको सिंपली रन करते हैं। मैं सेव कर रहा हूँ P2 के नेम से। इसको सेव करेंगे हम किस फोल्डर में, पिक्चर्स के फोल्डर में, क्योंकि हमने पहले भी पिक्चर्स में ही सेव किया था। सेव एंड लेट्स रन दिस।
सो अभी मुझे पता लग पाएगा कि ओके, वन सेकेंड, लेट मी गिव द पाथ। ये मैंने आपको कल बता दिया था कि अगर पाथ सेट नहीं होगा तो प्रोग्राम्स रन नहीं होंगे। जिस फोल्डर में आपने प्रोग्राम सेव की हैं वहीं आपका पाथ भी होना चाहिए। पिक्चर्स, एंड इट्स 20th एंड 21st में। ओके, नाउ लेट्स रन दिस। इसने रन कर लिया है। रिजल्ट का हम वेट कर रहे हैं। बिजी दिखा रहा है अभी ये, इसका मतलब ये इसको कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, तो वेट करते हैं थोड़ा सा, क्या रिजल्ट आने वाला है चेक करेंगे। अभी तक हम मॉडल को रन कर रहे थे, इसलिए वहाँ पे स्पीड ही काम हो रहा था। इसको हमने छोड़ दिया था। अब इसमें हमने पहला प्रोग्राम आज रन किया है ओपन करने के बाद, सो दैट इज वाई इट्स टेकिंग अ टाइम। अदरवाइज छोटा सा प्रोग्राम है, अगर सिमुलिंक आप वर्क नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली आप इस पे वर्क कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी आपका आउटपुट मिलेगा। एक बार ये भी अगर हो जाएगा रन, तो इसके बाद भी बहुत जल्दी आउटपुट मिलने वाला है। So now it's giving us the power that is torque is 0.3392। okay, अब जो ये टॉर्क मुझे मिल रहा है, ये ऑब्वियसली अगर आप एक चीज चेक करें तो हमने जो ये अप्लाई किया, स्पीड अप्लाई की 1750, ये है क्या, रेवोल्यूशन पर मिनट। that mean we have to calculate it for seconds, like it is for rpm, and when we are going for the formula t is equals to p by w, जिसमें हमें t न्यूटन पर मीटर मिलना चाहिए, तो वो जो वैल्यू है वो हमें कैसे चेक करनी है, सेकंड्स के अकॉर्डिंग। तो उसको सेकंड्स में चेक करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस t with 60, because 1 minute is equals to 60 seconds, so t is equals to t multiplied by 60। ये मुझे फाइनल रिजल्ट चाहिए, इसलिए मैंने इस लाइन को भी टर्मिनेट किया। इस लाइन को टर्मिनेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये रिजल्ट मुझे प्रिंट कराना है। अब हम रन करेंगे तो मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो डेट इज नियर अबाउट 20.35। so 20.35 is the max value which we can apply here। okay, ये मेरा क्या होना चाहिए, इतना मैक्सिमम टॉर्क लोड होना चाहिए। तो अभी तो अगर हम वापस आए, अभी हमने सिर्फ वन अप्लाई किया, तब भी जो हमारी स्पीड है वो कितनी आ रही है, 240 के अराउंड आ रही है। और अगर मैं 20.35 फुल लोड अप्लाई कर दूंगा तो वैल्यू तो और कम हो जाएगी। पर ऐसा नहीं है। एक्चुअली आपने जो आरपीएम कैलकुलेट किया था वो 1750 इस मोटर का था आरपीएम, राइट। लेकिन जो यहाँ पे स्पीड आपको ये आउटपुट साइड पे दिखा रहा है, ये रेडियन पर सेकंड में दिखा रहा है। ओके, लेट्स कनेक्ट अ डिस्प्ले ब्लॉक टू क्लियर दीज थिंग्स। ग्राफ में हमें, मैंने क्या बोला था, ग्राफ में हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो हम प्रॉपरली चेक नहीं कर पा रहे कि एग्जैक्टली कितना है। ग्राफ हम देख रहे हैं इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बट प्रॉपरली वी आर नॉट एबल टू चेक द वैल्यूज, राइट। so now what we are doing, we are taking one display block, and then we have to take four inputs for this display, right। so अब मैं इसमें से फोर इनपुट्स कैसे लेके आऊं, क्योंकि मैं डायरेक्टली इसको नहीं कनेक्ट कर सकता, एक ही कनेक्ट होगा। नाउ वी नीड अ मक्स मल्टीप्लेक्सर। पहले हमने बस सेलेक्टर का यूज किया था 1 to 4 करने के लिए, अब मुझे 4 to 1 करना है, तो 4 to 1 करने के लिए वी नीड टू यूज मक्स। और नंबर ऑफ इनपुट पोर्ट्स रिक्वायर्ड 4। Let's connect them one by one. Speed, armature, field, and torque. And this I'm connecting here. Let's double click. Not double click. Just run the simulation. अभी हम ग्राफ को चेक करेंगे नहीं, ठीक है। अभी हम सिंपली डिस्प्ले पे देखेंगे क्या आउटपुट आ रहा है। देखो सिमुलेशन धीरे धीरे रन हो रहा है और स्पीड जो है वो हमारी कहाँ पे है, 230 तक पहुंची है। इस जब आपने इसको दोबारा से रन कर रहा हूँ, फिर से देखना, स्टार्टिंग में जब सिमुलेशन 1% था तो स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी और धीरे धीरे वो रेड्यूस हुई, राइट। और क्यों रेड्यूस हुई, क्योंकि हमने जो अपना टॉर्क अप्लाई किया 1 का अप्लाई किया। नाउ लेट्स चेंज द टॉर्क टू द फुल लोड, दैट इज 20.35। 20.35 कहाँ से आया, वो हमने अभी यहाँ पे कैलकुलेट किया था इस फॉर्मूला से, राइट। तो फुल लोड को अप्लाई करते हैं और सिमुलेशन को रन करते हैं। Now we can see the speed is continuously decreasing and now it is 183.3। तो अभी हम आरपीएम पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि आरपीएम था 1750 आरपीएम और रेडियन पर सेकंड में स्पीड मिल रही है। अगर मुझे एग्जैक्ट डेटा चेक करना है आरपीएम में ही,
तो वी नीड टू कन्वर्ट दिस रेडियन पर सेकंड इनटू आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट। तो पहले तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे और फिर सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए वी ऑलरेडी नो 180 बाय पाई से वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस स्पीड जो आ रही है रेडियन पर सेकंड में, इसको डिग्री पर मिनट में कन्वर्ट करना है, दैट इज कॉल्ड आरपीएम। तो उसके लिए वी हैव टू कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री, दैट मीन्स 180 बाय पाई से वी हैव टू मल्टीप्लाई। एंड उस सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए ऑब्वियस वी नीड टू डिवाइड बाय 60। ओके, सो 180 by pi and then divide by 60, that must be equals to 3 by pi, right? क्योंकि 180 by pi 60 pi, तो 60 से 180 हमारा हट जाएगा तो बचेगा 3 by pi। so that mean here we have to apply the formula कि इसको 3 by pi से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास एक रिजल्ट आ जाएगा। तो उसके लिए मैंने एक गेन ब्लॉक यहाँ पे पिक किया, इसको डिलीट कर लेते हैं एंड थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं पहले। now I am connecting this here, connecting it here, and let's apply the formula in this gain block, that is 3 by pi। बट जब गेन ब्लॉक यूज करते हैं तो 10 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना होगा, इसलिए हम 30 बाय पाई कर रहे हैं, राइट। वन मोर थिंग, अब स्कोप में जो आउटपुट जा रहा है वो ऑब्वियसली क्या है, स्कोप का आउटपुट अभी भी कितना है, रेडियन पर सेकंड है, पर डिस्प्ले पे जो आउटपुट अब आप देखोगे वो रेवोल्यूशन पर मिनट का देखोगे। मैं आपको दोनों ही केस में रन करके इसको दिखाने वाला। तो 1750 आरपीएम पे फुल लोड पे आपकी मोटर ऑपरेट कर रही है। अगर आप चेक कर रहे हैं जो उसका टॉर्क है वो 20.35 है, तो आपका मोटर आपको बिल्कुल सही आउटपुट दे रहा है, 100% एफिशिएंसी आपको मिल रही है। लेकिन अगर आप स्कोप में जाके चेक करेंगे तो स्कोप में आपको वो 240 के अराउंड मिल रही है रेडियन पर सेकंड में। तो अगर आपको ग्राफ में भी आरपीएम ही चाहिए तो इसको डिलीट करते हैं और ग्राफ को भी इस फॉर्मूले के बाद कनेक्ट करते हैं। नाउ इफ वी रन, तो स्कोप में जाके देखेंगे कि हमारी जो वैल्यू है वो अब 1750 के अराउंड आ जाएगी। ये वो पूरा होने देते हैं इसको। डन। सो नाउ इट्स अबाउट 1750 आरपीएम, जो कि 20.35 लोड पे कांस्टेंट हो गई है स्पीड। सो दैट मीन मेरी जो ये मोटर है ये हमें क्या दे रही है, 100% एफिशिएंसी दे रही है। अब हम इस पे डिफरेंट डिफरेंट केसेस को अप्लाई करेंगे, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम योर साइड, डू यू गाइज हैव एनी डाउट्स? कुछ भी ऐसा जो आपको नहीं समझ में आया, आपको प्रॉब्लम हो रही है, 20.35 कैसे किया या रेडियन पर सेकंड से आरपीएम में कैसे कन्वर्ट किया? इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी। नो डाउट्स, दैट्स गुड। ठीक है, वापस आते हैं। अभी क्या अप्लाई करेंगे कि हम इसमें एक स्टेप फंक्शन चलाते हैं। स्टेप फंक्शन क्यों चला रहे हैं? अभी हमने क्या किया, डायरेक्ट वन अप्लाई किया नो लोड, या फिर डायरेक्ट अप्लाई किया फुल लोड। ओके, अभी कुछ ऐसा करते हैं कि स्टार्टिंग में हम उस पर लोड रिड्यूस करते हैं, मतलब नो लोड रखते हैं। थोड़ी देर बाद उसमें हम क्वार्टर लोड रखेंगे, फिर हाफ लोड और फिर फुल लोड, और ये मैं बार बार चेंज नहीं करूंगा, बट आई वांट कि ये ऑटोमेटिकली चेंज होता रहे। गिव मी अ सेकेंड। सो व्हाट आई एम सेइंग कि अब हम स्टार्टिंग जैसे 10 सेकंड का सिमुलेशन टाइम है, तो स्टार्टिंग में नो लोड अप्लाई करते हैं, जीरो, फिर थोड़ा सा लोड इंक्रीज करेंगे क्वार्टर, फिर हाफ और फिर फुल, इस तरह से हम करते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या रिक्वायर्ड होगा, नाउ आई नीड अ स्टेप फंक्शन। अब ये स्टेप फंक्शन भी अगर मैं यहाँ कनेक्ट करता हूँ डायरेक्टली, तो ये भी प्रॉब्लम है, क्योंकि स्टेप फंक्शन मुझे सिर्फ एक नहीं चाहिए, मल्टीपल चाहिए होंगे। मल्टीपल क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे नो लोड भी अप्लाई करना है, क्वार्टर लोड भी अप्लाई करना है, हाफ लोड भी अप्लाई करना है और फुल लोड भी अप्लाई करना है। इसलिए अब जो हम स्टेप फंक्शन लेंगे वो सिर्फ एक स्टेप फंक्शन से हमारा काम नहीं चलेगा, ज्यादा स्टेप फंक्शन हमें यूज करने होंगे। तो हम क्या करते हैं, हम दो या कितना करना है, नो लोड, क्वार्टर लोड, हाफ लोड, फुल लोड, 4 स्टेप फंक्शंस का हम यूज करते हैं। ठीक, तो 4 स्टेप फंक्शंस का यूज करने के लिए हमने एक और इसका डुप्लीकेट ले लिया, एक और डुप्लीकेट प्लेस किया और एक और डुप्लीकेट प्लेस किया, राइट।
नाउ वी डोंट हैव टू कनेक्ट दिस हेयर, क्योंकि हमें चारों एक पॉइंट पे कनेक्ट करना फिजिबल नहीं होगा। ऐसे हम चारों को कनेक्ट करेंगे तो वो समझ नहीं पाएगा कौन से फंक्शन को रन करना है, इसलिए हम अप्लाई कर रहे हैं अब एक सम ब्लॉक। सम के जो इनपुट हैं वो दो ही हैं, प्लस प्लस, मुझे चाहिए 4, तो लिस्ट ऑफ साइंस प्लस 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 प्लस। ओके, नाउ लेट्स कनेक्ट ऑल ऑफ देम। अभी भी आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है, दैट इज व्हाट, कि हमने जब प्लस प्लस किया तो ऑब्वियसली सारे आपस में टोटल हो गया, सम हो गया, और सम होने की वजह से तो सारे स्टेप फंक्शंस को एक साथ अप्लाई कर देगा। बट ऐसा वो कर सकता है, लेकिन ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि वैल्यूज अभी तक हमने असाइन नहीं की है। नाउ वी आर गोइंग टू असाइन द वैल्यूज, राइट। तो जैसे हम पहले स्टेप फंक्शन को रन कर रहे हैं, तो स्टेप टाइम को हमने बोला 1, ओके, और इनिशियल वैल्यू 0, नो लोड मतलब 0, ओके, एंड देन फाइनल वैल्यू हम जो इसमें अप्लाई कर रहे हैं वो अभी 1 लेके चलते हैं, एंड देन सेकेंड स्टेप फंक्शन में आते हैं, जिसमें हमने बोला स्टेप टाइम इज कौन से 10 सेकेंड्स हैं, ठीक है, 10 सेकेंड्स को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। वापस आते हैं पहले इसमें, तभी समझ में आएगा आपको। तो हमने स्टेप टाइम में यहाँ पे कितना लिया, 1, पहले सेकंड में हमने अपनी जो वैल्यू दी वो कितनी दी, 0, नो लोड, ओके, एंड इनिशियल वैल्यू भी 0 है, मतलब स्टार्ट भी 0 से ही हो रहा है, नो लोड से, और हम दे भी नो लोड ही दे रहे हैं पहले सेकंड में। फिर 2.5 सेकंड, 2.5 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस 10 सेकंड्स के सिमुलेशन को 4 पार्ट में डिवाइड किया, नो लोड, क्वार्टर लोड, हाफ लोड, फुल लोड, और फाइनल वैल्यू में रख रहा हूँ 5। 2.5 सेकंड्स में मतलब कि 2.5 सेकंड्स के बाद इस पे क्वार्टर लोड अप्लाई करो। अब क्वार्टर लोड 5 कैसे आया, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हमारा फुल लोड कितना है, कितना है, यहाँ पे आते हैं ना वापस, 20.35 है, तो इसका क्वार्टर कितना हो जाएगा, ऑब्वियस 5 हो जाएगा, 5 पॉइंट समथिंग। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैंने उसकी कितने ले ली, यहाँ पे 5 फाइनल वैल्यू कर दी है। अभी हम जाते हैं हाफ लोड की तरफ। तो हाफ लोड हम अप्लाई कर रहे हैं, कितना होना चाहिए, 10, और कौन से सेकंड में अप्लाई कर रहे हैं, फिफ्थ सेकंड में अप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट सेकंड में अप्लाई किया, नो लोड 0, फिर 2.5 सेकंड्स के बाद क्या अप्लाई किया, क्वार्टर लोड, दैट इज 5। अब फिफ्थ सेकंड के बाद क्या अप्लाई किया, हाफ लोड, दैट इज 10, और 7.5 सेकंड्स के बाद अप्लाई करेंगे फुल लोड। तो स्टेप टाइम इज नाउ 7.5, और फाइनल वैल्यू इज द फुल लोड, दैट इज 20.35। तो हमने इस तरह से अपने चारों स्टेप फंक्शंस को रन किया। अब हम प्लस कर रहे हैं, लेकिन प्लस का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये पहले सेकंड में अप्लाई होना है, ये 2.5 में, ये 5 में, और ये 7.5 में। नाउ लेट्स रन द सिमुलेशन। और अब आपको फोकस करना है इस पॉइंट पे, डिस्प्ले पे क्या होने वाला है। देखिए स्टार्टिंग में स्पीड आ रही है 23.7 आरपीएम, और वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, अपने लोड्स को अप्लाई कर रहे हैं। ग्राफ में चल के देखते हैं, क्योंकि डिस्प्ले में तो रिजल्ट अब कांस्टेंट हो गया है। that this is the point when we are applying the no load, जहाँ पे हमारा टॉर्क कितना है, 0 चल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इस पॉइंट पे आके हमने क्वार्टर लोड अप्लाई किया, दैट इज नियर अबाउट 5, और ये कौन सा पॉइंट है, 2.5 सेकेंड। और ऐसा करने से जब हमने जो अपना हमने क्वार्टर लोड अप्लाई किया 5 न्यूटन पर मीटर का, उससे मेरी स्पीड रिड्यूस हुई। उसके बाद हमने कौन से सेकंड में, फिफ्थ सेकंड में हमने हाफ लोड अप्लाई किया 10 के अप्रॉक्स, दिस वैल्यू इज अप्रॉक्स 10 न्यूटन पर मीटर, और यहाँ पे आके हम स्पीड को देखेंगे तो और रिड्यूस हुई। और फाइनली हमने 7.5 सेकंड, 7 और 8 के बीच में 7.5 सेकंड पे फुल लोड अप्लाई किया। तो फुल लोड अप्लाई होने के बाद मेरी जो यहाँ पे वैल्यू है स्पीड की, और रिड्यूस हुई। इसका मतलब फाइनली इफ वी सी हेयर 1391 आरपीएम मुझे अपनी मोटर का मिल रहा है। तो अब आप देखो पहले और अब में कितना चेंजेस आया है। पहले आपने कांस्टेंट लोड अप्लाई किया, अब आपने लोड को बार बार चेंज किया, लोड को चेंज करने से स्पीड में भी कितने चेंजेस आए हैं। सो दिस इज द वे टू चेक द आउटपुट फॉर द स्पीड एंड द टॉर्क और अदर थिंग्स फॉर डीसी मशीन. Now if you have any doubts you can ask, otherwise now we are going for the final model to create the vehicle. अभी तक आपने व्हीकल को चार्ज कैसे करना है ये बनाया, व्हीकल में पल्स कैसे जनरेट करनी है, कंट्रोल सिग्नल्स कैसे देने हैं ये बनाया, और फिर उसके बाद आपने व्हीकल की मोटर्स के आउटपुट को चेक किया। बट फाइनली नाउ वी आर मूविंग टू डिजाइन द व्हीकल, कि कैसे हम अपना एक व्हीकल बना सकते हैं, कैसे उसमें लोड सप्लाई करके हम चेक करेंगे कि हमारे व्हीकल की स्पीड इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है।
So if you have any doubts, you can ask me. Otherwise, I am going for the final part. इस फाइनल पार्ट को हम पावर ट्रेन मॉडलिंग या व्हीकल मॉडलिंग भी बोलते हैं. आई एम वेटिंग फॉर द इनपुट्स फ्रॉम योर साइड. कोई डाउट नहीं है. ओके, ठीक है, फिर अपना फाइनल मॉडल प्रिपेयर करते हैं. लेट मी सेव दिस सिमुलेशन. M4. Let's create a new model now. ठीक है. सो अभी हमें चाहिए व्हीकल. सबसे पहले हम सर्च कर रहे हैं व्हीकल बॉडी. अब हमें सब कुछ पिक करना है. व्हीकल का चेसिस, व्हीकल के टायर्स और गियर असेंबली वगैरह जो भी आपको अप्लाई करना है. ठीक. तो ये हमने एक व्हीकल बॉडी पिक किया है और इसमें हम अब समझते हैं क्या क्या चीजें हैं. H is called the hub, B is called the velocity, W is called the wind aerodynamic force, and beta is called the hill climbing force, that is angle, right? कितना एंगल आपको अप्लाई करना है. And then NR and NF, right? NR is the for rear wheel and F is for the front wheel. कितना आप टॉर्क लोड अप्लाई करेंगे रियर व्हील पे या फ्रंट व्हील पे. तो उसके लिए हमें पहले व्हील कनेक्ट करने हैं. तो लेट्स कनेक्ट सर्च टायर मैजिक फॉर्मूला. दो टायर्स लेके चल रहा हूं मैं. वाई? बिकॉज आई एम कंसिडरिंग कि मैं एक टू व्हीलर बना रहा हूँ. नाउ लेट्स कनेक्ट हब टू हब. दिस हब टू हब. आपने व्हीकल का चेसिस रेडी किया, नीचे का जो पार्ट होता है. ओके. एंड देन आई एम कनेक्टिंग दिस एन टू एन आर एंड दिस एन टू एन एफ. अब ये एन एफ मतलब फ्रंट, इसका मतलब मेरा व्हीकल का फ्रंट ये है, बैक ये है. दैट इज कम्प्लीटली योर चॉइस हाउ यू कनेक्टिंग. तो आप खुद से फ्रंट बैक कर सकते हैं. इसके बाद ए, जिसके साथ हमें बेसिकली अपने मोटर्स या शाफ्ट या गियर असेंबली जो भी आप चाहते हैं वो कनेक्ट करना है. बट फिलहाल के लिए मैं कुछ भी कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ व्हीकल के साथ. वट आई एम कंसिडरिंग कि मेरा जो व्हीकल है वो एक उसमें मोटर्स हैं, व्हील्स हैं, ठीक है, और उसमें कोई मोटर नहीं है. हम उसको पुश करेंगे, धक्का देंगे, एंड देन वी विल सी what are the changes in the speed if you are applying the push force, wind force, and the beta, right? So for that what I am doing, let's search rotational freehand. I'm not connecting anything with this A, that is why I connected it rotational freehand. Okay. मतलब अभी कोई मोटर नहीं, कोई शाफ्ट नहीं, कोई गियर मैकेनिज्म नहीं, सब कुछ बिल्कुल फ्री रखते हैं और व्हीकल को नॉर्मली चेक करते हैं. अगेन रोटेशनल फ्री हैंड. Now we have to check the velocity. So let's pick the scope. And we cannot connect it directly, right? Scope को हम directly connect नहीं कर पाएंगे. So we need PS to Simulink converter. Scope is the Simulink block. Vehicle body is the power system block. So PS to Simulink converter. And then अभी मुझे अगर विंड अप्लाई करनी हो, कांस्टेंट्स अप्लाई करने हो, बीटा पे अप्लाई करना हो, तो लेट्स टेक द कांस्टेंट ब्लॉक. बट दिस टाइम वी आर नॉट टेकिंग दिस कांस्टेंट ब्लॉक, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे एरो बना हुआ है. इसका मतलब ये नॉर्मल कांस्टेंट ब्लॉक से कनेक्ट नहीं होगा. आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ट्राई करना चाहें तो, मतलब वैसे तो कनेक्ट नहीं होगा, पर आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं. मना कर रहा है. ओके. सो इसके लिए भी आपको या तो पी एस टू सिमुलिंक चाहिए या फिर आपके पास एक और ब्लॉक है, दैट इज डायरेक्टली पी एस कॉन्स्टेंट ब्लॉक. पी एस कॉन्स्टेंट. एंड लेट्स टेक वन मोर पी एस कॉन्स्टेंट for the beta, right? Control I to flip, Control I to flip,
and let's connect this vent here. Is it connected? Yes, it's connected. And then beta here, angle here. अभी मैं कुछ भी अप्लाई नहीं कर रहा हूँ डायरेक्टली. इफ यू ओपन द व्हीकल बॉडी तो हमें सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज अप्लाई करनी है कि हम व्हीकल का मास कितना लेंगे, व्हील पर एक्सल कितना लेंगे, इन सब चीजों को मुझे अप्लाई करना है. मतलब मुझे एक डेटा शीट चाहिए. तो लेट्स गेट बैक टू द डेटा शीट and vehicle modeling, EV modeling. And do we have Excel sheet here? No. Yes, we have it. Let me search where it is. Okay, I guess मैंने कल आपको दिखाई थी ये शीट, इंट्रोडक्शन में थी. Yes. सो दिस वे आई एम कंसिडरिंग कि मेरा जो मास है वो 1000 kg है, या 1 मीटर मेरी विड्थ है, 1.5 मीटर हाइट है. बट ये जो डेटा है ना, ये 4 व्हीलर का है, राइट. और जो मैं अभी हम जो मॉडल बना रहे हैं वो 2 व्हीलर का है. मॉडल बनाना मैंने आपको सिखा दिया है. तो एक काम करता हूँ, ऐसा मॉडल ओपन करता हूँ जहाँ पे पहले से सारा डेटा रखा हुआ है, राइट. वो 2 व्हीलर का ही मेरे पास एक मॉडल बना हुआ है, उसको मैं दिखाता हूँ. एज इट इज होगा, बट डिफरेंस ये आएगा कि अभी हमने इसमें वैल्यूज अप्लाई कर दी हैं, उसमें इसमें वैल्यूज अप्लाई नहीं किए और उसमें ऑलरेडी वैल्यूज अप्लाइड होंगी. तो उस मॉडल को ओपन कर लेते हैं. अदरवाइज हमें पूरी शीट से डेटा कॉपी करना होगा. इट विल टेक अराउंड अबाउट 10 to 20 minutes टू असाइन ऑल द डेटा. इसलिए डायरेक्टली ओपन करते हैं मॉडल को. सी, इट इज सेम, राइट. एक और चेंज आपको बस यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज द सॉल्वर कॉन्फ़िगरेशन. जो आपको ऑलरेडी पता है कैसे लगाते हैं. आपको देखना है तो आप फिर से देख सकते हैं. The solver configuration I have to search to solve this model, and then this I connect with this one. Okay, let's get back to this. अभी हम इस पे डबल क्लिक कर रहे हैं एंड नाउ वी कैन सी कि क्या क्या डेटा हमारा यहाँ पे ऑलरेडी असाइन है. सो व्हाट वी आर कंसीडरिंग कि मेरे व्हीकल का टोटल वेट 327 है और राइडर का वेट 80 kg है. सो आई असाइन द यूनिट ऑफ kg है. देन नंबर ऑफ व्हील्स पर एक्सेल इज 1, मतलब हम 2 एक्सेल यूज कर रहे हैं क्योंकि हमने दोनों को रोटेशनल फ्री हैंड से कनेक्ट किया है. इन फ्यूचर हम दोनों के लिए सेपरेट एक्सेल यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम 1 लेके चलेंगे. और अगर आपको एक ही एक्सेल यूज करना है दोनों व्हील के लिए तो आप क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ व्हील्स पर एक्सेल इज 2. और अगर आप 4 व्हीलर एक एक्सेल से बना रहे हैं तो 4. ओके. थोड़ा सा आपको पढ़ना होगा, व्हीकल का बेसिक पढ़ना होगा, लाइक कितने एक्सेल क्या होता है, या चेसिस क्या होता है, असेंबली में शाफ्ट, गियर मैकेनिज्म, ये सब चीजें क्या होती हैं. Then the horizontal distance from CG to front axle is 1520 mm I am considering. Then horizontal distance from CG to rear axle, that is क्योंकि मैंने 2 एक्सेल लिए हैं तो रियर एक्सेल का डिस्टेंस थोड़ा डिफरेंट है मेरा और फ्रंट एक्सेल का डिफरेंट है. और CG की हाइट जो है ग्राउंड से वो कितनी है, 254. देन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो स्टैंडर्ड है 9.81. ऐसे ड्रैग में जाके हमने फ्रंटल एरिया डिफाइन किया. इवन फ्रंटल एरिया मैंने आपको यहाँ पे भी दिखाया था. विड्थ है, हाइट है, तो आप फ्रंटल एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके. सो इन दिस केस व्हेन वी आर डूइंग for 2 व्हीलर it is 1.33 मीटर स्क्वायर एंड ड्रैग कोफिशिएंट इज 1.2. देखते हैं 4 व्हीलर में कितना ड्रैग कोफिशिएंट था, 0.30, राइट. यहाँ पे हमारा ड्रैग कोफिशिएंट 1.2. ए डेंसिटी इज स्टैंडर्ड 1.18. यहाँ पे भी हमने शायद इतना ही लिया होगा, थोड़ा सा चेंज है 1.25, राइट. एंड देन पिच ऑफ वेरिएबल्स, नथिंग टू अप्लाई, राइट. एंड इसके बाद हमने इसको सबको अप्लाई किया और अपने व्हीकल को हमने रन किया. लेट मी चेक द वैल्यूज हियर व्हाट वी हैव अप्लाइड इन द कांस्टेंट ब्लॉक. इट्स नथिंग, दिस इज आल्सो नथिंग फॉर नाउ. इसका मतलब आपका व्हीकल प्लेन सरफेस पे है, आपने कोई पुश नहीं किया है और ना ही कोई आपने एंगल अप्लाई किया, ना ही कोई एरोडायनेमिक फोर्स है. रन करके देखते हैं क्या मुझे रिजल्ट इसका मिल रहा है. लेट्स डबल क्लिक ऑन द स्कोप. तो व्हीकल आपका रोटेशनल फ्री हैंड है, जीरो स्पीड है, व्हीकल में कोई मूवमेंट नहीं है, उसकी वेलोसिटी जीरो है क्योंकि आपने उसको कहीं भी अभी तक पुश करने की कोशिश नहीं की है. अब फिलहाल हम इसको पुश करें भी तो कैसे पुश करें, बिकॉज कोई इट्स नॉट लाइक द व्हीकल
जिसको हम अभी पुश करके आपको दिखा पाए, ऐसा कोई इसमें ऑप्शन भी नहीं है. वी डोंट हैव एनी ऑप्शन टू अप्लाई द कांस्टेंट ब्लॉक साइड. वी हैव ओनली टू कांस्टेंट blocks here in this vehicle body. The one is W and the other one is the beta. If we talk about the W, that is called the wind, and beta is the angle, right? So what we are doing now, हम एक चीज आपको दिखाते हैं, फिर हम इसमें वैल्यूज को अप्लाई करेंगे. हम ये कंसीडर करते हैं कि हमारा जो व्हीकल है उसको हम पुश नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो एक स्लोप पे है. तो पहले एक स्लोप बनाते हैं. ठीक है, ऐसा हम एक स्लोप बना रहे हैं और ये मेरी एक रोड है, राइट. अब हम कंसीडर करते हैं कुछ चेंजेस अप्लाई करके, जैसे विंड को अभी जीरो रख के चलते हैं, एंगल पे चलते हैं, बीटा एंगल पे. और हम यहाँ पे अपना एंगल, नाउ वी आर अप्लाइंग द एंगल, दैट इज 1 second. Now we are applying the angle 10 radian. Okay, apply, okay, and run. Now if we go to check this velocity, let's see what changes we are getting now. So let's get back to the scope. दिखा आपको स्पीड इंक्रीज हो रही है, पहले जीरो पे कांस्टेंट थी, नाउ द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग. इसका मतलब कि अगर हम अपने व्हीकल को 10 डिग्री का एंगल दे रहे हैं तो मेरा व्हीकल कहीं इस पॉइंट पे है जो नीचे की तरफ आ रहा है. और ऑब्वियसली अगर 10 डिग्री का स्लोप है तो व्हीकल अपने आप चला जाएगा. रोटेशनल फ्री हैंड है, मोटर कनेक्ट नहीं है, शाफ्ट नहीं है, एक्सल है सिर्फ, और कोई भी गियर मैकेनिज्म नहीं है. तो व्हीकल को आपने इस तरह से प्लेस किया एक स्लोप में 10 डिग्री के, तो ऑब्वियस व्हीकल को इस वेलोसिटी मिलेगी, इसलिए आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, राइट. अभी कोई डाउट है किसी को, कोई सिंगल डाउट भी है तो आप पूछ सकते हैं. डू यू वांट टू से समथिंग? नो. ओके, फाइन. सो अभी हमने जो चेक किया, व्हाट वी आर चेकिंग, द स्पीड ऑफ द व्हीकल इज इंक्रीजिंग व्हेन वी आर अप्लाइंग द एंगल ऑफ 10 डिग्री. दैट मीन जो मेरा व्हीकल है वो किस पॉइंट पे है, स्लोप के टॉप पे है, और उसको एक वेलोसिटी मिल रही है, एक मोमेंटम मिल रहा है, वो खुद नीचे जा रहा है, राइट. नाउ वी आर अप्लाइंग द डिफरेंट वैल्यू. हु इज कमिंग एंड गोइंग अगेन एंड अगेन? Now let's change this value. The beta, I am doing it minus this time. Why I am doing it minus 10? Now because now we are considering मेरा व्हीकल इस पॉइंट पे है और अब ये हिल को क्लाइंब कर रहा है. तो ऑब्वियस है जब आप हिल को क्लाइंब करेंगे तो वेलोसिटी शुड डिक्रीज. अभी कांस्टेंट थी जब कोई एंगल नहीं था. जब 10 डिग्री अप्लाई हुआ तो व्हीकल को स्लोप मिला डाउन स्लोप, लेकिन अब अप स्लोप है, हिल क्लाइंब करना है आपको. और अगर अब आप स्पीड को देखने जाएंगे, वेलोसिटी को देखने जाएंगे, तो ये रिड्यूस हो रही है. ये देखो जीरो से भी माइनस में जा रही है. दैट मीन आपका व्हीकल ऊपर नहीं चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ने की कोशिश में वापस नीचे आ गया है, उसको रिवर्स फोर्स मिल रहा है. आपके व्हीकल की डायरेक्शन क्या हो गई है, रिवर्स हो गई है. whenever we are doing the part of the electric vehicle, कीप दिस इन योर माइंड. फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर आपका व्हीकल है तो स्पीड शुड बी समथिंग लाइक प्लस, एंड इफ द व्हीकल इज गोइंग टू द रिवर्स बैक डायरेक्शन, द स्पीड यू आर गेटिंग इन द माइनस. कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऐसा सोचते हैं माइनस मिल रहा है मतलब कि बैक ईएमएफ जनरेट हो रहा है. नो, माइनस का मतलब यहाँ पे रिवर्स इंडिकेट कर रहा है कि आपका व्हीकल पीछे की तरफ जा रहा है. ओके, सो वी अप्लाइड द एंगल फॉर हिल क्लाइंबिंग -10 and hill down, that is slope down, that is +10. Now let's make some more changes. कि अभी मैं इसको क्या करता हूँ, वापस +10 पे लेके आते हैं. इसका मतलब फिर से मुझे स्पीड मिलनी चाहिए, वेलोसिटी इंक्रीज होनी चाहिए, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बट दोबारा दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं इसमें कुछ और अप्लाई करने वाला हूँ. अब आप इस वैल्यू को चेक कर लो, ये किसके अराउंड पहुंच रही है, 35 टू 40 के अराउंड स्पीड इंक्रीज होकर आपको 10 सेकंड्स में मिल रही है. अगर आप 20 सेकंड्स के लिए रन करेंगे, स्लोप और बढ़ा देंगे, तो ऑब्वियस है कि आपको और वेलोसिटी मिलना स्टार्ट हो जाएगी. बट स्टैंडर्ड 10 सेकंड्स के लिए चेक कर रहे हैं, 35 से 40 के बीच में हमें वेलोसिटी अभी मिल रही है. और नाउ आई एम अप्लाइंग दिस विंड फोर्स, दैट इज कॉल्ड एरोडायनेमिक फोर्स. मैं एरोडायनेमिक फोर्स की कांस्टेंट 10 लेके चलता हूं और इसको अगर रन करते हैं, नाउ वी विल सी द अदर चेंजेस इन द वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल. लेट्स वेट फॉर इट. तो अभी क्या हुआ, आपका व्हीकल
तो ऐसे था, स्लोप डाउन था, राइट। बट उसको अपोज करने के लिए एरोडायनेमिक फोर्स आ रहा है, मतलब व्हीकल का डायरेक्शन तो नीचे है, उसको स्लोप डाउन मिल रहा है, बट हवाएं चल रही हैं और वो उसको अपोज कर रही हैं। अपोज कर रही है मतलब व्हीकल की वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। दैट मीन द वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल इज डिक्रीजिंग, राइट। नाउ इफ वी अप्लाई कि हमारी जो एरोडायनेमिक फोर्स है वो व्हीकल को सपोर्ट दे रहा है, अपोजिट डायरेक्शन से नहीं, इसके साथ चल रहा है, इसका मतलब इसको पुश कर रहा है। तो ऑलरेडी स्लोप है लाइक दिस। अभी एरोडायनेमिक फोर्स नीचे से था तो व्हीकल का जो वेलोसिटी है वो 40 से नीचे आ गया, आपने देखा 32 के आसपास। और अब आप व्हीकल पे एरोडायनेमिक फोर्स इसके ऊपर से अप्लाई करें, ऊपर से अप्लाई करें मतलब कि आप इसको स्लोप डाउन में खुद मोमेंटम मिल रहा है, और कुछ मोमेंटम इसको कौन दे रहा है, एरोडायनेमिक फोर्स दे रहा है, हवाएं दे रही हैं। तो उससे हमारे व्हीकल में क्या चेंजेस आने वाले हैं, लेट्स सी। सो फॉर दैट आई एम अप्लाइंग दिस वैल्यू इनटू, one second, which model we are doing, this model. So now I'm applying the value, that is -10. Let's run this. Now this is the final output which we are going to check कि मेरी velocity में क्या increment दिख रहा है। Yes, now it's in between 40 to 50। जो पहले सिर्फ स्लोप डाउन में 35 टू 40 के बीच था, उसको अब एरोडायनेमिक फोर्स उसके साथ मिला जो उसको और सपोर्ट कर रहा है, उसको और पुश कर रहा है, वेलोसिटी मेरी 40 टू 50 के रेंज में आ गई है, इंक्रीज हो गई है। और जब हमने इसी एरोडायनेमिक को इसके अपोज किया था तो वो 30 टू 40 के बीच में थी, और जब सब कुछ नॉर्मल था तो वो 35 टू 40 के बीच में था। सो दिस इज द वे हाउ वी कैन अप्लाई द विंड फोर्स, एरोडायनेमिक फोर्स, हिल क्लाइंबिंग फोर्स एंड अदर फोर्सेस ऑन द vehicle, right? So now do you have any doubts, any questions which you want to ask to me? No questions, okay. See, now we have designed the complete electric vehicle, right? Now if we have to design more things, right, now what we did, we have connected the free hand here, that is called the rotational free hand. Now if we have to design the complete electric vehicle, what should be the process? With this A axle, you have to connect either the shaft or the gear assembly. That's up to you how you are going to design your vehicle. And then you have to connect that shaft to the DC machine which we used in the last model. And then to provide the DC voltage to field current and the armature current, you have to take the power converter and the power inverter circuit. So initially you have a pulse generator for the driver signals, and then that pulse generator you are using to convert AC to DC as well for the power converters. Then you have to boost your DC voltage. So you will be using the power inverter circuit. सबने सुना है the inverter is called DC to AC, but here when we are using the inverters, it's not DC to AC. We are increasing or decreasing the voltage step down or step up of the DC. So that is why I'm telling it power inverter only. Okay, confused नहीं होना है. So what is the vehicle modeling overall? जो आप देख रहे हैं ये vehicle modeling ही है, but इसमें free hand है. If you have to design with everything, तो मैं आपको फिर से एक स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ. फर्स्ट यू हैव पल्स जनरेटर, दैट मीन द कंट्रोल सिग्नल. देन यू हैव पावर कन्वर्टर टू कन्वर्ट द एसी टू डीसी, दैट्स कॉल्ड द ऑन बोर्ड चार्जिंग कॉन्सेप्ट, जिससे आपका बैटरी चार्ज होगा. सो बैटरी को आपने चार्ज किया तो बैटरी से आप कनेक्ट कर सकते हैं मोटर, field current and armature current. Then you have to connect that motor to either gear assembly or shaft assembly or the axle, which directly you can connect to the wheels. जो ये wheels आपको सामने अभी दिख रहे हैं. Now it's up to you that you are going to design for two wheeler or four wheeler. According to that you have to choose number of wheels, and then you have to directly connect with all those with the motors, right? Then you can apply the aerodynamic force and the wind force and hill climbing force, push force, or drag force. All other forces you can apply here to check the actual output, that is your speed. Is that clear? So power converter, power inverter, DC machine, that is motor, and then you have your vehicle body, final that, and then you can combine everything, that is called the powertrain modeling or the vehicle modeling. That's it. We have session. Now, if you guys have any doubts, you can ask me. Otherwise, we are going to wind up the session. I'll give you some information about the certificates and other things as well. Before that, I would like to know from your side. Anyone having any doubt can ask me.
नो डाउट्स आई कंसीडर कि आपको कुछ समझ में नहीं आया या सब कुछ समझ में आ गया। क्या समझूं मुझे नहीं पता है, अभी आपके फेसेस को देख के पता लगेगा। प्लीज टर्न ऑन योर कैमरास, we'll take a picture and then we'll wind it up. This we are recording for attendance, okay? Shiksha, sorry, and Dipanshu, please turn on your camera for the attendance. Shiksha, can you hear us? Shiksha is not there. Okay. Smile, everyone. Done. Any doubts? No? अरे बोल नहीं रहे हो, सिर तो हिला दो ऐसे। No, sir. No doubt. No, sir. No, Okay, sir. okay. Thank you Okay, so much, then sir. we can. Okay, most welcome, most welcome. Okay, then you guys can leave the session. Diksha, now you arrived. आपको सुनाई दे रहा है तो आप भी अपना कैमरा ऑन कर लो। We are recording the attendance. All others can turn off the cameras क्योंकि आप सबका हो गया। And you can leave if you don't have any doubts. सर मैंने Diksha, if बैच you लिया can था hear उसका us. इंटर्नशिप वाला बैच लिया था मैंने सुनने वाला। Okay. उसके रिगार्डिंग बात करनी थी So, मुझे। बोलिए बोलिए योगेंद्र। सर मैंने 1 जून के लिए लिया था मैंने, वो मैडम बोली थी 1 जून में सीट खाली नहीं है। 1 जून वाला बैच फुल है ऑलरेडी। यस, आई एम टेकिंग दैट बैच एंड दैट इज ऑलमोस्ट फुल। तो सर फिर क्या करूँ फिर मैं? आप थोड़ा सा वेट करो। इफ अगर कोई ड्रॉप करता है, अभी अभी ऑलमोस्ट 10 days है हमारे पास, अगर कोई ड्रॉप करता है उस बैच को तो डेफिनेटली आपको इंफॉर्मेशन आएगी, ठीक है। अगर कोई ड्रॉप नहीं करता है तो यू विल हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट बैच। आप कौन से कॉलेज से हो योगेंद्र? मैं बीजन इंस्टीट्यूट से हूँ सर, अलीगढ़। अलीगढ़ से, ओके। एंड आपका जो वेकेशन है, एग्जाम कौन से ईयर के स्टूडेंट हो आप? फाइनल ईयर का हूँ सर, मेरे पेपर हैं 5 जून से। तो आप व्हाई यू आर गोइंग फॉर द 1st June बैच व्हेन यू हैव योर एग्जाम्स फ्रॉम 5th of June? मैंने 15 जून का लिया था मैंने सर, पहले 15 जून वाला, 15 मई वाला बोला था मैंने, वो मिला नहीं मुझे। नहीं आप, अच्छा, ओके ओके। दीक्षा, इफ यू डोंट हैव एनी डाउट्स यू कैन लीव। ओके, सो आपके एग्जाम कब तक होने हैं? सर 5 जून से मेरे शायद 10 या 12 को खत्म हो जाएंगे, 6-7 दिन में। ठीक है, दैट मीन यू आर मोर कंफर्टेबल इन 15th June बैच, राइट? ओके सर, ओके। और अभी अभी 15th June में सिंगल रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। ओके सर, ओके, वो ठीक है तो बस। तो हाँ, तो हो सकता है कि अगर वो बैच स्टार्ट करें तो सिर्फ सिंगल स्टूडेंट आपके साथ भी स्टार्ट करें। वो डिसाइड होगा बाद में, देखते हैं। अभी क्या पता तब तक रजिस्ट्रेशंस आ भी जाएं। अदरवाइज बाकी बैचेस हमारे फुल हैं, ठीक है। हमने एक लिमिट डिसाइड की है कि हम 40 स्टूडेंट्स को एक बैच में रखेंगे। 40 से ज़्यादा हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि फिर बहुत हौच पौच हो जाती है, डाउट सॉल्व नहीं हो पाते हैं। क्योंकि अभी तो ये फ्री सेशन था, इसलिए कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, कोई आंसर क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहा है। बट या तो हो सकता है मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ इसलिए कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, या हो सकता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसलिए क्वेश्चन नहीं है। पर जब कोई पे करेगा और तब उसको करेगा तो डेफिनेटली सबके पास क्वेश्चंस होंगे, डाउट्स होंगे। और मोर देन 40 स्टूडेंट्स के डाउट्स को एक ही सेशन में सॉल्व करना इज क्वाइट डिफिकल्ट, इसलिए हमने 40 स्टूडेंट्स पर बैच रखा है। तो लेट्स सी अभी 15 जून में कितने आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन आएगी। यू डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, ओके। आपको सारी इन्फॉर्मेशन ओके, व्हाट्सएप पर मिलती रहेगी। ओके सर, ओके। ओके देन, थैंक यू सर। ओके, बाय बाय, वेलकम वेलकम।